Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss West Bengal State Eligibility Test Economics Previous Year Question 2024. This is your part number 2. In this part we are going to discuss from question number 26 to 50 question. So those who come for the first time, please subscribe to this channel, and those who do not watch the previous part videos, they can watch in the playlist. I have given the link of the playlist in the description box so that you can watch all the previous set questions of West Bengal and as well as other state question. So let's start today's video. Question number 26. Chow test using dummy variable doesn't tell us that the two regression are different, there is significant structural break in the data, the source of difference between the two regression, or the estimates of the two regression functions are statistically different. Chow test using dummy variable doesn't tells us, आम जदि कहवा राइट ऑप्शन हो द सोर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू रिग्रेशन सोर्स ऑफ डिफरेंस टाक सी डजंट टेल आमको कही पारे ना कहीं द चाउ टेस्ट यूजिंग ए डमी वेरिएबल कैन डिटेक्ट व्हेयर देयर इज ए स्ट्रक्चरल ब्रेक और इफ टू रिग्रेशन आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट तो सेटा मीन्स मेजर करे हाउएवर इट डजंट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सोर्स ऑफ द डिफरेंस तार स्पेसिफिक सोर्स टाक से आइडेंटिफाई करि पार ना सच एज व्हेदर द वेरिएशन इज ड्यू टू चेंजेस इन कोएफिशिएंट intercept or other factors. So it only indicate the existence of a difference, not its cause. And तार existence of difference टाकू से indicate करी पारे but तार cause टाकू indicate करी पारे नहीं. So it doesn't tells us the source of difference between the two regression. Option C is your right answer. Then question number 27. If one of the explanatory variables in our regression model is the lagged value of the dependent variable, then the model is known as dynamic model, autoregressive model, fast difference form, best fit model. तो सेटा को को टाइप रो मॉडल को आजिबो ताको को आजिबो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल. ऑटो रिग्रेसिव ऑप्शन बी कहीं ना इफ वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन आवर रिग्रेशन मॉडल इज लैग्ड value of the dependent variable, then the model is also known as auto regressive. कहीं ना when a regression model includes the lagged value of the dependent variable as an extra explanatory variable, it is referred as an autoregressive model. Such models are commonly used to capture dynamics where the current value of the dependent variable depends on its past value. तो ये autoregressive model is your right answer. Then question number 28 को आसीबा. The sum of pairs of values in the x y series is equal for all the observation. In this case, the value of the correlation coefficient between x and y is 0, 0.5, 1 or -1. So correlation coefficient between x and y is -1 because if the sum of the pairs of the value in the x and y series is constant for all observation, means x plus y is equal to constant. It indicate a perfect negative relationship between x and y. जदि constant रहिला ताले x plus y is equal to constant जदि रहउची ताले तांको भितरे गोटे नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन इंडिकेट करियो. As x increases y decreases by the same amount resulting in the correlation coefficient -1. गोटे इंक्रीज हला गोटे डिक्रीज हबो तो सेठी तार जो correlation coefficient -1 have option D is your right answer. Then question number 29. Suppose the lowest value of a series of the observation is 4.4 and range is 19.6. A student computed mean as 24.4 and median as 24.2. Then identified the correct statement from the below. Both mean and median are wrong. Mean is right, median is wrong, or mean is wrong, median is right. ना both mean and median are right. तो ये आम टेस्ट करिबा कोटा और माने राइट होची ते होतरे टू डिटरमाइन द करेक्ट स्टेटमेंट. फास्ट आम कौन कौन देइची देखिबा. एठी देखो देइची हमरो 4.4 टा दोजी हमरो लोएस्ट वैल्यू. एठी गिवन अछि लोएस्ट वैल्यू रहिला 4.4, देन रेंज अछि 19.6, then mean अच्छी 24.4 and median अच्छी 24.2. टेस्ट करिबा. Since the range is 19.6 ताले highest value in the series must be highest value टा कौन lowest value plus range. हमरो एटी जदि आमे highest value बाहर करिबा
हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू प्लस रेंज हो तो लोएस्ट वैल्यू आमर केते अछि लोएस्ट वैल्यूटा अछि 4.4 प्लस रेंज केते अछि 19.6 4.4 प्लस 19.6 इज इक्वल टू आमर 19 22 23 24 24 24.0 24 ताहले आमर हाईएस्ट वैल्यूटा आसला केते 24 आसला तापर देखिबा मीन देछि केते मीन देछि 24.4 ताहले given that the highest value 20 it's unlike that the mean is 24 is the mean is typically within the range of the data mean टा कोन रहइबो range of the data भितर रहइबो highest और lowest भितर एठी देखो lowest टा देछि केते ना 4.4 ताहले mean टा केते रहइबो either 4.4 रु 24.0 भितर ही mean रहिबा कथा कहीं मीन टा तो ताहारी भितर माने एवरेज वैल्यू आसीबो ना 4.4 रु 24 भितर रहइबो किंतु मीन देला 24.4 माने पारी जाउछ तो मीन टा एठी इनकरेक्ट हे जिवो कने 24.4 तो हबो नै अधिक हबो नै ताहारी भितर रहइबो आ मीडियन लो वैल्यू देछि 24.2 देछि सिंस द मीडियन इज द क्लोजेस्ट ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू मीडियन टा हमरो कहा पाखा पखी हे जाउछि ना हाईएस्ट वैल्यू पाखा पखी हे जाउछि 24.2 so it is possible that the median is correct based on the analysis हमें कहि परिबा जे मीडियन टा कोन होछि ना ई रेंज भीतर अछि मिड वैल्यू टा को माने को जगह रे भी हे पारे ये एति की रेंज भीतर मिड वैल्यू कोठी भी हे पारे तो मिड वैल्यू 24.2 तेणुक मीन टा एठी इनकरेक्ट हम आम कहीपर कहीं मीन टा तो यार भितर रहा हम ना मीडियन टा पाखापाखि मीडियन टा मिड वैल्यूटा सेटा या भितर मिड वैल्यू को जगह भी हो पारे माने या ठाऊ टिके अधिक हेले भी माने जस्ट 24.2 अच्छी तो सेटा हो पारे सेटा को आम भूल कहि परिबा नै हो पारे तो मीन टा भूल हम बट मीडियन करेक्ट हो पारे तो ऑप्शन अनुसार जदि आम देखिबा मीन टा रॉन्ग हम और मीडियन टा राइट हो तो ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर Then question number 30 को आसीबा consider a group of 20 people if everyone shakes hands with everyone else how many handshake take place तो गोटे ग्रुप रे 20 people अछंती 20 जन people अछंती जदि समस्ते समस्त सहित हैंडशेक करेंगे माने समस्ते समस्त सहित कौन हेबे ना हाथ मिलेबे तो ता द्वारा माने हाउ मेनी हैंड्स टेक प्लेस माने केतेटा हैंडशेक माने केते जन को सहित हैंडशेक कले बोली आमे बाहर करबा 440 ना 380 ना 190 तो यार फॉर्मूला तो आम जो यार वैल्यू बाहर करवा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हैंडशेक वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन सिंस ईच हैंडशेक इज ए यूनिक पेयर ऑफ पीपुल ताले देखो प्रत्येक हैंडशेक माने जड़े एठी लोक आउ जड़े लोकंकर हैंड सहित मिसेब हाथ मिलेब ताले समस्तंकर गोटे कौन हम ना यूनिक हम जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला माने हैंडशेक रो यूनिक पेयर ऑफ पीपुल हम माने जड़े लोक आउ जन सहित हाथ मिलेला आउ जन लोक आउ जन सहित हाथ मिलेला ताले फॉर्मूला फॉर हैंडशेक आम जदि बाहर करबा ताले तार फॉर्मूलाटा कौन हम n इंटू n-1 बाय 2 हम n इंटू n-1 कहीं फास्ट जी हाथ मिले थो सी तो आउ जन सहित लास्ट सहित हाथ मिलेबनी कहीं सी ऑलरेडी आउ क्या सहित हाथ मिले थो तो n-1 से नियाजिव n इंटू n-1 तो ये टोटाल n माने नंबर ऑफ पीपुल केते जन अच्छी 20 पीपुल अच्छी ताले आम जदि फॉर्मूला अनुसार 20 इंटू 20-1 केते 19 तो 20 इंटू 19 बाय 2 तो 20 इंटू 19 बाय 2 2 10 20 हो अच्छा ताले 19 10 केते 190 190 तो 190 हो यार राइट आंसर कहीं n-1 करने हम जड़े कहीं सेठी अधिक हो गले जड़े एक्सट्रा हो गले सेटा एक्सट्रा हैंड आसी जाऊँ गोटे तो एक्सट्रा हैंड को माइनस करने पड़ो कहीं डबल काउंटिंग हो तो से n इंटू n-1 बाय 2 फॉर्मूला पुट करदे ये 190 हम तो हाउ मेनी हैंडशेक टेक प्लेस ताले 190 हैंडशेक हो पार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची 31 को आसीबा ए बाउल कंटेन 5 चिप्स 3 चिप्स आर मार्क्ड 1 and 2 rupees chips are marked 4 rupees a player draws 2 chips at random and it is paid the sum of the value of the chips the player's expected gain is dash तो से कहूँ गोटे बाउल रे बड़ा धर गोटे बाउल अच्छी तो ये बाउल रे किछि चिप्स रही
फाइव चिप्स अच्छी 5टा चिप्स अच्छी 3 चिप्स आर मार्क्ड 1 माने 1 1 1 ये भाया 3टा अच्छी तापर 2 चिप्स आर मार्क्ड 4 तो 4 वाला 2टा रही ए प्लेयर ड्रॉज 2 चिप्स रैंडम तो या भर 2टा चिप्स को सी रैंडमली चूज कर ड्र कर एंड रैंडमली ड्र कला एंड इट इज पेड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द चिप्स तो चिप्स रो माने जति दाम सेति देला ताले द प्लेयर्स एक्सपेक्टेड गेन माने केते से गेन करिवार पॉसिबिलिटी केते रहउची तो आमे फास्ट आगे देखिबा जो 2टा चिप्स रैंडमली से चूज करिवो कोन कोन आसीबार पॉसिबिलिटी अछि देखो गोटे जदि आमे फास्ट रू गोटे गोटे पेयर करिबा ताले 1 4 आसी पारे किंबा हमरो खाली 1 1 आसी पारे किंबा खाली 4 4 आसी पारे ए टाइप रो पेयर तो आसीबो ना 2टा जोड़ा जो आसीबो तो जदि आमे फास्ट नबा 1 1 नबा तो 1 + 1 माने 2 आसीबो तापर सेकंड रे जदि नबा खाली 1 गोटे आसिला 4 गोटे आसिला ताले टोटल 5 हे गला जदि आमे खाली 4 4 आसीबार पॉसिबिलिटी भी गोटे अछि तो 4 4 आसी गले 8 हे जिवो तो ए भला 3टा पेयर रहिला 1 1 1 4 किंबा 4 4 तो 1 4 किंबा 4 1 से सेम तो वैल्यू तो 5 आसीबो ना तो सेति पई ताको थरे नै गेली 1 1 1 4 किंबा 4 4 ए भले आसीबो तापरे प्रोबेबिलिटी को हमें इच पेयर कैलकुलेट करबा ताले द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 चिप्स फ्रॉम 5 इज गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला हमरो 2 चिप्स आसीबो टोटल केतेटा अछि 5 चिप्स रु 2 चिप्स आसीबो ताले प्रोबेबिलिटी हमरो 5/2 आसीबो 5/2 कना टोटल 5 चिप्स आउ हमरो ताले हम जे देखिबा द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 चिप्स फ्रॉम 5 इज गिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला 5 2 तो 5 × 2 जदि हम देखिबा 5 × 2 = 10 हे जिवो 10 हे जिवो एटा 5 × 2 हबो केना जो 2टा चिप्स अछि आउ माने 2टा चिप्स चूज करिवो 5 कॉम्बिनेशन भीतर 5 × 2 माने 10 और टोटल नंबर ऑफ वेज 10 हे परिबो तो ता भीतर आमे देखिबा गोटे गोटे काहेर प्रोबेबिलिटी केते रहउछि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग हम जदि फास्ट 1 रो बाहर करबा 1 रो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग केते हबो ना 1 केतेटा अछि 3टा अछि जदि 1 रो प्रोबेबिलिटी बाहर करबा तले 1 3टा अछि सो द नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 तो 2 चूज करिवार प्रोबेबिलिटी केते आसीबो ना 3 टोटल 3टा 1 अछि 3/2 माने चूज 2 इज 3/2 3/2 × 2 2 2 कटि गले 3 आसीबो ताले प्रोबेबिलिटी 3 रो माने केते आसीबो यार 1 रो 3/10 आसी जिवो से वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 एंड 4 1 एंड 4 नबा गोटे कॉम्बिनेशन 1 1 1 खाली थिला 1 एंड 4 जदि नबा ताले देयर आर 3 1 एंड 2 4 so the number of ways to choose 1 and 4 ताले केते आसीबो 3 1 आसुची केते 3 × 2 आसीबो केते 4 आसीबो केते 2 so 3 × 2 = 6 ताले यार प्रोबेबिलिटी केते आसीबो 6/10 से वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 4 रो प्रोबेबिलिटी केते रहइबो ना देयर आर 2 4 एंड द नंबर ऑफ वेज टू चूज इज 2 ताले 2/2 2/2 = 1 ताले 1 रो प्रोबेबिलिटी माने 4 रो प्रोबेबिलिटी 1/10 आसीबो सो हमरो एक्सपेक्टेड वैल्यू बाहर करबा एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय एक्सपेक्टेड गेन केते से गेन करछु एक्सपेक्टेड गेन जदि नबा ताले फास्ट रा आसीबो केते ना एक्सपेक्टेड गेन मु एठी लिखुची फास्ट 1 रो एक्सपेक्टेड गेन केते रहइबो 1 केतेटा अछि 1 रो एक्सपेक्टेड गेन 1 केतेटा 2टा अछि माने 1 + 1 2 रहिछि ताले 2 × 1 रो प्रोबेबिलिटी केते अछि 3/10 so 2 × 3/10 प्लस ये गोटे पेयर रहिला तापरे हमें देखिबा 1 और 4 1 4 किबा 4 1 रो केते आसुची कॉम्बिनेशन टोटल 5 so 5 × तार प्रोबेबिलिटी केते आस्तिला ना 6/10 so 5 × 6/10 then plus 4 4 रो प्रोबेबिलिटी केते अछि ना 4 4 रो प्रोबेबिलिटी अछि 8 ताले 8
इंटू फर फर कॉम्बिनेशन टोटल 8 आ प्रोबेबिलिटी केते 1/10 सो 8 इंटू 1/10 सो ए तीनटा पेयर रहिला तो से तीनटा को प्लस कर दवा ताले एटी जदि करबा 2 5 10 ताले एटी केते आसि जाउछि 3/5 एटी से वाला काटिले 5 दुने 10 एटी 2 4 8 2 5 10 से वाला काटि देले एटी फास्ट रे आसि जाउछि केते ना कि एटी ना हाँ काटिकी वैल्यूटा को बाहर कर परिबो किबा एटी सिंपली आमी देखि देले 10 सब जगह रे थाउ ताले 3 दुने 6 6/10 जुक्त 6 5 30 30/10 जुक्त लास्ट एटी रहला 8 8/10 तो 10 10 10 30 8 38 6 44 ताले 44/10 44/10 इज इक्वल टू 4.4 तो 4.4 इज यार राइट आंसर तो 4.4 ताले 4.4 माने लेस देन 2 तो हबनी 3 हबनी 4 हबनी ग्रेटर देन 4 4.4 माने सेटा ग्रेटर देन 4 अछि तो 4 तो हबा नै ग्रेटर देन 4 हबो तो एक्सपेक्टेड गेन होची 4.4 माने ग्रेटर देन 4 हो ऑप्शन डी हिज यार राइट आंसर हो तब 32 को जीवा the cumulative distribution function fx of a random variable x has a slope of 1 for x in the interval 0 1 which of the following most accurately defines the probability density function of x it is constant in the interval 0 and 1 it is increasing in the interval 0 and 1 decreasing na first increase then decrease se kochi amaro cumulative distribution function of a random variable x has a slope of 1 for x in the interval 0 1 which of the following most accurately defined ताले एठी 0 1 अछि माने 1 अछि माने एटा कांस्टेंट रहइबो in the interval 0 1 रे कांस्टेंट रहइबो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर काहे ना the probability density function is the derivative of the cumulative distribution function so given that the slope of the cumulative distribution function fx is 1 in the interval 0 1 this means the derivative of fx with respect to x is constant and equal to 1 over its interval therefore the probability distribution function is constant in the interval 0 and 1 option a is your right answer तापरे 33 को आसीबा मॉडल आ तार डिस्क्रिप्टिव टाइटल दिया जायछि कोटा का सहित रिलेटेड हम ताकू चूज करिवा फर्स्ट होछि y i is equal to beta 1 plus beta 2 1/xi plus ui logarithmic reciprocal ना डबल logarithm reciprocal ना सेमी logarithm हबो एटा हेजिवो रेसिप्रोकल मॉडल हेजिवटा रेसिप्रोकल कहीं ना द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज मॉड्यूल एज ए फंक्शन ऑफ x एठी तो y इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 1/xi प्लस ui तो एटा रेसिप्रोकल हेजिवो तापरे log yi इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 xi प्लस ui एटा होची log अछि ताले डबल तो हबो नै एटा सेमी logarithm हबो semi logarithm where the dependent variable is logged तापरे log yi is equal to log beta 1 beta 2 log xi plus ui एटा हेजिवो जेहेतु log both side रहउचे एटा डबल logarithm function हेजिवो काना both the dependent and independent variable logged एटी dependent और independent दिटा को log अछि सेट पे डबल logarithm हे गला तापरे log yi is equal to beta 1 minus beta 2 1/xi plus ui एटा ताले logarithmic reciprocal हेजिवो 1/xi अछि ओ reciprocal हेजिवोटा logarithmic reciprocal काने involves the reciprocal of the independent variable so एटा जदि हमें फर्स्ट चूज करबा ऑप्शन ए टा हबो 3i a 3i b रो iv हला c रो 2i d रो i हला ताले एठी ऑप्शन नंबर कोथरे अछि देखिबा 3i iv 2i i तो 3i iv 2i i एटा ऑप्शन नंबर बी रे अछि तो बी हिज वेर राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 34 नंबर क्वेश्चन given below the four model specification which among the following model can be estimated using ordinary least square OLS expand stands for exponential and in stands for natural logarithm exp होची exponential आ in होची natural logarithm को सॉल्व करछ एठी कोटा ट्रू हबो ऑप्शन अनुसार देइछि हमें गोटे गोटे देखिबा कोटा ट्रू हबो
34 देख फास्ट अच्छी yi इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 xi स्क्वायर प्लस ui एटा ट्रू अटे कहीं ना এটা इंडिकेट करछि दिस मॉडल इज एन लिनियर इन पैरामीटर सो इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग OLS माध्यम रे कोटा एस्टिमेट करि परिबा एटा लिनियर इन पैरामीटर अछि y इज इक्वल टू बीटा 0 बीटा 1 x i स्क्वायर प्लस ui तो एटा ही परिबो तापरे yi इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 log xi प्लस ui एटा भी हे परिबो दिस इज आल्सो लिनियर इन पैरामीटर एटा लिनियर पैरामीटर अछि तणकर एज द logarithmic transformation is applied to the dependent variable not the parameter so it can be estimated using OLS एटा भी हमें OLS में एस्टिमेट करि परिबा तापरे थर्ड टाकू देखिबा थर्ड रे अछि y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्सपोनेंशियल xi प्लस ui एटा लिनियर नो एटा नॉन लिनियर रहिबो पैरामीटर इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अप्लाइड टू द पैरामीटर देयरफॉर इट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड यूजिंग OLS इन द करंट फॉर्म तो जेटू एटा नॉन लिनियर फॉर्म रे अछि एटा को हमें OLS अप्लाई करिकि तार रिजल्ट बाहर करि परिबा नाही तापरे yi इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 xi प्लस ui इटा ही परिबो दिस मॉडल इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट मॉडल सो लिनियर इन पैरामीटर अछि तो एटा OLS करिके ताको एस्टिमेट करा जाई परिबो iv तो i 2i एंड iv ए तीनटा जाको हमें OLS अप्लाई करिके ताको एस्टिमेट करि परिबा i 2i एंड iv ऑप्शन नंबर सी रे अछि तो सी हे जो यार राइट आंसर तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 35 सपोज x इज ए रैंडम वेरिएबल c इज ए कांस्टेंट and v refers to variance which of the following statement is not correct तो ऑप्शन अनुसार गोटे गोटे करेक्ट v of c variance of constant is equal to 0 ना एटा हबो नहीं variance of x plus c is equal to variance of x ना variance of x plus c is equal to variance of x plus variance of c yes एटा ही सेपरेट करिवो केना the variance of constant is indeed 0 so एठी हमरो ऑप्शन ऑप्शन सी टा इनकरेक्ट रहइबो आ सब करेक्ट रहइबो केना वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट एटा वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0 तो एटा ठीक अटे एटा हमरो राइट वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट 0 रहइबो तापरे वेरिएंस ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल प्लस ए कांस्टेंट माने एटा रैंडम वेरिएबल प्लस कांस्टेंट जो रहइबो टू द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एलोन सिंस एडिंग टू ए कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन माने कांस्टेंट ऐड करिले जहा न कले भी से सेटर डिस्ट्रीब्यूशन रे तार स्प्रेड ऊपर किसी इफेक्ट पड़ियो नै तनु करी वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू c हेले जहा न हेले से तो वेरिएंस ऑफ x सहित सेटा समान हो तो ये भी ठीक रहइबो तापरे वेरिएंस ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस c एटा ही इनकरेक्ट हे जिवो एटा हमरो इनकरेक्ट रहइबो काहे कि ना this is because the variance of a constant is 0 so adding it to the variance of x does not change the result variance of constant अगर 0 सहित आमे जदी x को ऐड करबा से तो सही variance of x रहइबा आ variance of c आ एक्स्ट्रा आ कोन आसीबो एक्स्ट्रा होबो नै तो एटा इनकरेक्ट हबो तापरे variance of x c into x is equal to c square into v into x एटा करेक्ट रहइबो केना v variance of cx रहिला c square v into x this is a standard property of variance तो एठी वेरिएंस रो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी अनुसार एटा करेक्ट हो तो ऑप्शन ए बी एंड डी ए तीनटा करेक्ट से पचार कोटा नॉट करेक्ट ताले ऑप्शन नंबर सी टा हे जिवो नॉट करेक्ट तो सी हमरो राइट आंसर हे जिवो तापर 36 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द मॉडल दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड इन एम्पिरिकल स्टडीज व्हेन द रिग्रेशन इज ऑफ द काउंट टाइप इज ऑर्डर प्रोबेबिलिटी मॉडल मल्टी नॉमिनल लॉजिक मॉडल पॉइजन रिग्रेशन मॉडल लिनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल तो ताको हमें कौन कहबा जदि द मॉडल दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड इन एम्पिरिकल स्टडीज रे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड हुए व्हेन रिग्रेशन इज वन ऑफ द काउंट सेटा हमें पॉइजन रिग्रेशन मॉडल टा सबुठ अधिक यूज होता है तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर कहीं ना द पॉइजन रिग्रेशन मॉडल इज कॉमनली यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेशन इज वन ऑफ द काउंट टाइप मीनिंग इट टेक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर लाइक हमरो 0 1 2 3 एमती नॉन नेगेटिव हे दिबो तो इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर मॉडलिंग द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट विदिन ए फिक्स पीरियड ऑफ एरिया तापरे अदर जो अच्छे आमर ऑर्डर प्रोबेबिलिटी मॉडल सो इट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनल डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर द आउटकम्स हैव ए नेचुरल ऑर्डर बट नॉट नेसेसरली इक्विडिस्टेंस तापरे मल्टी नॉमिनल लॉजिक मॉडल कौन इट इज यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज मल्टीपल कैटेगरीज बट दिस कैटेगरीज आर नॉट ऑर्डर तापरे
linear probability model hoji, it is a linear regression model used for binary dependent variables like 0 and 1 and not for count type variables. So Poisson regression is the most appropriate model for empirical studies. So option C is the right answer. Then question number 37, according to Granger and Newbold, a good rule of thumb to suspect that the estimated regression is spurious is given by high R square with low t value, means R square greater than t, or high t values with low Durbin-Watson d value t greater than d, or high R square and low Durbin-Watson d value or R square greater than d, or high R square and low f value or R square greater than f. Your right answer hobo option number C, high R square and Durbin-Watson d value R square greater than d, means according to Granger and Newbold, a spurious regression often occurs when two non-stationary time series are regressed on each other. So a common sign of a spurious regression is having a high R square and a low Durbin-Watson statistics. So the Durbin-Watson statistics measures autocorrelation in the residuals. A low value indicates potential autocorrelation, which is a common issue in spurious regression. So option C एठी right हबो. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 38, चूज द करेक्ट आंसर. सपोज A is a 2 into 2 matrix, then if so A is a 2 into 2 matrix, then determinant of A is not equal to 0, the matrix is non-singular and there is no linear dependence. Determinant of A is not equal to 0, then the matrix is singular and there is linear dependence, or not equal to 0, then the matrix non-singular and its rank is less than 2, the matrix is non-singular and there is linear dependence. So when A is a 2 into 2 matrix, then if determinant is not equal to 0, then the matrix is non-singular. Yes, matrix is non-singular and there is no linear dependence. Yes, option A is the correct answer, because a non-singular matrix, first a non-singular matrix, non-singular means here non-singular is one that has a non-zero determinant. So this means the matrix is invertible, and if the determinant of a 2 into 2 matrix is non-zero, the matrix is non-singular, implying there is no linear dependence among the rows and columns. So linear dependence means that one row or column can be written as a linear combination of others. So a non-zero determinant indicates that the rows and columns are linearly independent. So option A is the right answer. Then question number 39, the slope of a double log regression model stands for. Double log regression model stands for the relative change in y for an absolute change in x, the absolute change in y for a percentage change in x, or the percentage change in y for a given percentage change in x. Yes, this is the answer. Option number C. The slope of a double log regression model stands for the percentage change in y for a given percentage change in x. Because in a double log regression model, both the dependent variable and the independent variable, here y and x, both are transformed using natural logarithm. So the general form of the model is, we can write it as log y is equal to beta 0 plus beta 1 log x plus u plus u. So log y is equal to beta 0 plus beta 1 log x plus u. So in this model, the coefficient beta 1 represent the elasticity of y with respect to x, which means the percentage change in y for a given percentage change in x. So specifically, if x increases by 1%, then y will change by beta 1%. So assume the model in the log form. So option C is the right answer here. Then question number 40, examine the following diagram. Here the Gini coefficient is b by b plus a by a plus b, a by b, a plus b by a. Gini coefficient, here it is the line of equality and this is the line of inequality.
So to find out the Gini coefficient, here we have to apply the formula, the area between the equality and inequality line, that is the area between equality and inequality is equal to a by total area. Total area means a plus b. Here the Gini coefficient is the area between the equality line and inequality line, that is a, and the area between by total area. तो ये माने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी भितर एरियाटा केते ए और टोटल एरियाटा केते ए प्लस बी. सो ए बाय ए प्लस बी होची गिनी कोएफिशिएंट रो रिजल्ट. सो बी हे जो यार राइट आंसर. तापर क्वेश्चन नंबर 41 को आसीबा. कंसीडर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर डिफाइंड ओवर द इंटरवल 0 and 1. दिस फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड एट x इज इक्वल टू 1/2 एट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच the derivative of f1x f dash x is equal to 0 or at x is equal to 1 or at the point where the derivative f dash x is maximized. हमें फंक्शन देछि fx is equal to x square. तो to find the maximum value of the function fx is equal to x square over the interval केते अछि इंटरवल टा 0 and 1 अछि. ताले हम कौन करबा ना, वी नीड टू एग्जामिन द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल. क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट बाहर करबा. तो लेट्स फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय टेकिंग द डेरिवेटिव fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो तार डेरिवेटिव केते हे जिवो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. ताले डेरिवेटिव बाहर कले dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर रो डेरिवेटिव केते हे जिवो 2x हे जिवो. तो 2x ताले ताको हमें 2x इज इक्वल टू 0 पुट करिवा. दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0/2. 0 by something is equal to 0. तो x रो वैल्यू आछला 0. However x is 0 is not a maximum point at the function. It is increasing over the interval 0 and 1. So now let's examine the end point of the interval. तो एठी 0 हल तर सेटा मैक्सिमम होबो नै ना. एंड पॉइंट बाहर करियो. एंड पॉइंट रा हमर केते अछि 0 1 अछि इंटरवल टा. ताले जदि हमें f x जगह 0 पुट करिवा f0 इज इक्वल टू ताले केते अछि x स्क्वायर अछि. तो x स्क्वायर जगह 0 स्क्वायर माने 0. तापरे आ उटे पुट करिवा f1 पुट करिवा. fx जगह f1 पुट करिवा. तो 1 रो स्क्वायर माने 1 आसला. तो सही 0 1 आसुजी. सो सिंस f1 एठी f1 टा केते होछि f1 इज ग्रेटर देन f0. सो द फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड एट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 कहिना f1 टा ग्रेटर देन f0 आसुजी. सो आम कहीपर द फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड एट x इज इक्वल टू 1 आउ. तो सी है जो यार राइट आंसर. तापर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन को जीवा. चूज द करेक्ट आंसर इफ y इज इक्वल टू log 2x टू द पावर 5 देन dy by dx इज इक्वल टू केते होबा. हमें तार जस्ट वैल्यू बाहर करबा. आउ से कथा कहि आउ log रे हम जानि छी डेरिवेटिव जो अछि डेरिवेटिव रो जस्ट ऑपोजिट टाइप रो log हेता. तो एठी जदी हमर क्वेश्चन अनुसार y is equal to log 2x to the power 5. तो ये log रे अच्छे. तो y is equal to log 2x to the power 5. ताले हमें सेटा को डिफरेंट करि परिबा 2 into x to the power 5 अच्छे. ताले हमें लिखि परिबा log 2 plus log x to the power 5 एमती लिखि परिबा. दिटा को अलगा कर दवा. तापरे हमें एठी dy by dx रो फार्मूला पुट कर दवा. dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ केते हे जिवो log 2 by dx plus derivative of log x to the power 5 by dx. ताले log 2 टा होची कोन कांस्टेंट. तो log 2 कांस्टेंट रो डेरिवेटिव कोन हे जाय 0. तो डेरिवेटिव ऑफ log 2 by dx इज इक्वल टू 0 हे जिवो. 0 प्लस डेरिवेटिव log x to the power 5. log x to the power 5 अछि. ताले x to the power 5 को जदि आम एपट को नहीं आसा 5 इंटू log x डेरिवेटिव 1/x. ताले 0 प्लस 5 इंटू 1/x. तो 5 इंटू 1/x माने केते 5/x. तो 0 प्लस 5/x माने तो सही 5/x आउ. तो dy by dx रो वैल्यूटा एबे माने फाइनल आंसर आसीबो केते 5/x. तो 5/x ऑप्शन ए रे अछि. तो ए हे जिवार राइट आंसर. तापर नेक्स्ट 43 को जिबा. 43 रे देछि लैम्डा x प्लस बीटा y प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. अच्छा हाँ अल्फा x प्लस बीटा y
alpha plus beta is equal to 1, alpha x plus beta y, alpha plus beta greater than 1, 1 minus alpha into x plus 1 minus beta into y, माने तार भैल्यू आल्फा भैल्यू 0 ରୁ 1 भितर बीटार भैल्यू 0 ରୁ 1 भितर से भाया आल्फा एक्स प्लस 1 इन 1 माइनस आल्फा व्हिच ऑफ द एबव इज एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कन्वेक्स कॉम्बिनेशन या भितर कोटा रहे एक्स एंड वाई भितर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन सो आम ये बाहर करवा convex combination of x and y. The convex combination of x and y is the linear combination of the form माने linear combination आमर केमती हुए ये अच्छी alpha x plus 1 minus alpha into y ये फॉर्म को आसीबो आउ हर माने यार वैल्यूटा अल्फा वैल्यूटा 0 ରୁ 1 भितर रेंज करिवो तो 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1 एटा ही हमर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बा लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म ताले फास्ट देखिबा alpha x plus beta y alpha plus beta equal to 1 this is not necessary a convex combination as alpha and beta can be outside the range 0 and 1 तो 0 and 1 भितर alpha beta रो वैल्यू आसी न पारे सो एटा होबो नै तापर सेकंडा देखिबा ये भी से बड़ा ग्रेटर देन 1 होची so this is not a convex combination as the coefficient of alpha and beta do not sum to 1 तो ग्रेटर देन 1 तो होबो नै तापर थर्ड टा देखिबा थर्ड रे से देची जे कौन 1 माइनस आल्फा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बीटा इंटू वाई तो आल्फा वैल्यूटा 0 1 भितर बीटार वैल्यू 0 1 भितर रहिबो दिस इज नॉट ए कन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज द कोएफिशिएंट डू नॉट एड अप टू 1 एंड लास्ट जदि देखिबा आल्फा एक्स प्लस 1 माइनस आल्फा दिस इज ए कन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज द कोएफिशिएंट ऑफ आल्फा एंड 1 माइनस आल्फा एठी आल्फा रहिছে गोटे आउटे 1 माइनस आल्फा रहिছে आर नॉन नेगेटिव एंड अप टू 1 सो आम जो देखा आईवी खाली ओनली आईवी गोटे अच्छी आउ जदि आम फास्टारे जदि आल्फा और बीटार वैल्यू 0 एंड 1 भितर रखा ताले फास्टा भी करेक्ट हो पार एठी आमर आईवीटा गोटे करेक्ट रोचे आदि आम फास्ट्रे आल्फा और बीटार वैल्यूटा जदि 0 और 1 भितर रखिपारे ताले आईटा भी करेक्ट हो पार तेणुक बोथ 1 एंड IV ये दुटा करेक्ट हो आमर क्वेश्चन अनुसार 43 रो राइट आंसर तापर 44 को जीवा इन CES प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A इंटू अल्फा L टू द पावर माइनस थीटा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू K टू द माइनस थीटा माइनस U बाई थीटा रही तो हेयर Q इज इक्वल टू आउटपुट एंड N एंड K आर लेबर एंड कैपिटल सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो एफिशिएंट पैरामीटर म्यू डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर Q सब्स्टिट्यूट पैरामीटर अल्फा एंड रिटर्न टू स्केल पैरामीटर A सो तार कोड भी देछि कोटा कहा सहित हबो सॉरी माने ABCD एपटे देछि सेपटे कोड तार देछि कोटा कहा सहित इक्वल हबो आमे ताको सिलेक्ट करबा ए CS प्रोडक्शन फंक्शन अनुसार तटी फास्ट होछि एफिशिएंसी पैरामीटर एठी कोटा हे जिवो A हे जिवो हमर एफिशिएंसी पैरामीटर कहीं एफिशिएंसी पैरामीटर रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी और टेक्निकल प्रोग्रेस पैरामीटर तापर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटरटा ऑप्शन अनुसार जो देखिबा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटरटा हे जिवो अल्फाटा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर हे जिवो अल्फा कहीं अल्फा रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर व्हिच डिटरमाइन्स द शेयर ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन आउटपुट तापर सब्स्टिट्यूशन पैरामीटरटा हे जिवो Qटा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर कैन इट रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर आल्सो नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल तापर रिटर्न टू स्केल पैरामीटर सेटा हे जिवो हमरो म्यू रिटर्न टू स्केल पैरामीटर सो ताले हमर राइट आंसरटा ऑप्शन नंबर ए हे जिवो IV3 2II तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 45 नंबर if AR is equal to 15 MR is equal to 5 then the price elasticity of demand is equal to price elasticity of demand AR और MR रे गोटे फॉर्मूला अच्छी price elasticity of demand is equal to सिंपल फॉर्मूला अच्छी AR by AR minus MR डायरेक्ट फॉर्मूला तो सही फॉर्मूला एठी पुट कर देबा AR रो वैल्यू अच्छी 15 by 15 minus 5 ताले 15 by 10 तो 15 by 10 इज इक्वल टू 5 दूने 10 5 3 15 3 by 2 3 by 2 माने जदि पॉइंट रे बाहर करबा
ताले 2 के 2 पॉइंट आसीगले 10 2 पंचा 10 1.5 तो ऑप्शन बी हे जीवो राइट आंसर डायरेक्ट फार्मूला तापरे 46 नंबर क्वेश्चन choose the correct answer. One of the criticism associated with the new Marxist theory developed by Barron is that this thesis ignores the probability that power is often transferred from one elite to another when revolution occurs. Yes, it is the right option hobo kahinki na one of the criticism of the neo-Marxist theory, particularly as developed by Paul Barron, is that if the overlooks of the possibility that revolutionary changes may result in a shift in power from one elite group to another, rather than a fundamental change in the structure of power itself. So this critique suggests that Barron's theory doesn't fully account for the dynamics of elite power transfer during revolutions, which may leave the underlying system of explanation intact. तुमकरी ऑप्शन ए टा यार राइट आंसर हो तापरे 47 होचे अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ए strictly increasing relationship, a strictly decreasing relationship, no relationship, fast increase and then decrease relationship. Simon Kuznets अनुसार fast increase then decrease, inverted U hypothesis Simon Kuznets curve. So fast increase then decrease. So option D is the right answer here. According to Simon Kuznets, the relationship between per capita income and income inequality follows what is known as Kuznets curve. This hypothesis suggests that as an economy develop करिवा स्टार्ट रे जो फास्ट स्टेज रे इकोनॉमी डेवलप करिवो इनकम इनइक्वालिटी फास्ट इंक्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देन डिक्रीज एज द इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप. सो दिस U shaped curve, inverted U shape, is typically used to describe the relationship between economic development and inequality in a country's income distribution. So option D is the right answer here. Then come to question number 48. The O-ring theory developed by Michael Kremer places emphasis on O-ring theory. Education of the labor force, skill mixing, purchase of machinery and equipment by firms, skill complementaries. So option D is your right answer. The O-ring theory developed by Michael Kremer emphasized the importance of skill complementarities in the production process. The theory suggests that small reductions in the quality or skill level of one worker can have large effects on the overall productivity of the team or firm. Much like a failure of a single O-ring can cause a catastrophic failure in the complex system. This highlights the importance of having workers with complementary skills working together to achieve high productivity. So it is related with skill complementarities. Then question number 49, accession and reason. Accession is the multi-dimensional poverty index of UNDP, considers the intensity of an individual's poverty going beyond the overall count of poor people. Reason is including intensity helps identify the poorest of the poor. Here accession is the multi-dimensional poverty index of UNDP, consider the intensity of an individual's poverty, yes, going beyond the overall count of poor people. This is right, accession is right, because multi-dimensional poverty index developed by UNDP does include consider the intensity of poverty, which goes beyond simply counting the number of people who are poor. The multi-dimensional poverty index takes into account multiple dimensions of poverty such as health, education, living standards, and measure the intensity of poverty of each individual. So सबको नहीं कि से स्टडी करता है हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड को, तो से आसेसनटा करेक्ट हम. तापर रीजन हूँ इंक्लूडिंग इंटेंसिटी in the multi-dimensional poverty index, it helps identify not just who is poor but also how poor they are. केते पोर सेटा को भी सामने किपरि सामने पोर हिचंदी सेटा को भी दर्शाई थाए. So this approach allows for identifying the poorest of the poor who may be more severely deprived in multiple dimensions. तो इटा को भी से आइडेंटिफाई करता है, पोरेस्ट ऑफ द पोर को भी आइडेंटिफाई करता है. रीजन भी ठीक अच्छे, एसेसन भी करेक्ट अच्छे. तो आम जदि देखिबा ऑप्शन अनुसार both accession and reason are correct. तो ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर.
देन क्वेश्चन नंबर 50 को आसीबा टुडेज लास्ट क्वेश्चन अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर अंडर एम्प्लॉयमेंट कहले आमे कोन बुझिबा पीपल हु आर विलिंग टू वर्क are unable to find job. Now may people in the labor force have 2 or more jobs. People are working full time yet have a low marginal product. People work in a free labor market with a very low wage. Yes, भेरी लो वेज रे काम करता से कह जाए अंडर एम्प्लॉयमेंट माने से काम तो करुँच किंतु निजर इच्छा मुताबिक काम पाऊना तो धर जड़े बहुत ग्रेजुएट स्टूडेंट सी जस्ट गोटे पियन रो जॉब करूँ तो से जगह तार क्वालिफिकेशन अधिक अच्छी बट से अनुसार जॉब पाऊनी तो ताठारू कम लेवल जॉब रे सी काम करुँच तो कम वेज रे काम करवाटा को कह जाए अंडर एम्प्लॉयमेंट तो डी हो यार राइट आंसर। अच्छा ये देखिए लेबर मार्केट रे वर्क इन ए फ्री लेबर मार्केट ना ना यहाँ हम ना लो वेज तो काम करेंगे किंतु आ गोटे ऑप्शन 3 रे अच्छी पीपल आर वर्किंग फुल टाइम येट हैव ए लो मार्जिनल प्रोडक्ट। येस यहाँ ही अंडर एम्प्लॉयमेंट रो माने करेक्ट डेफिनेशन हम जदि आम परफेक्ट डेफिनेशन को कहवा ऑप्शन सी टा हो कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग बट देयर वर्क डजंट फुल्ली यूटिलाइज देयर स्किल्स एबिलिटीज और पोटेंशियल। ସେଥିପାଇଁ this often involves people who are employed full time but are engaged in jobs that require fewer skills than they possess or have low productivity resulting in no marginal product। तो ସେମାନେ काम तो କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ जो जॉब रे एंगेज अछंती सेटारे अल्प स्किल दरकार fewer skills than they possess तांको माने जेतिकी possess करछंती ताठार fewer skills दरकार and have low productivity और have low productivity resulting in low marginal product। तेणुक ये आम कहीपर अंडर एम्प्लॉयमेंट रे पीपल आर वर्किंग फुल टाइम येट हैव ए लो मार्जिनल प्रोडक्ट तो सी हो यार राइट। तो ये भाव में आज आम क्वेश्चन 25 डिस्कस करदे 50 पर्यंत आउ 2टा पार्ट कवर करवा। तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो जदि किसी डाउट रही भी ओपनली कमेंट करें मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखना हो प्लेलिस्ट देखिपर वेस्ट बेंगल 2023 अच्छी अदर सबू स्टेट अवेलेबल अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विजिट करके देखिपर। नेक्स्ट क्लास रे देखा से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।